Assalamu alaikum students. Hope you are doing well. This is the second lecture about Unit 9, selecting the right career. And it's a reading comprehension through questions. उम्मीद है आपने पहले लेक्चर को गौर से सुना होगा और की पॉइंट्स को लिख लिया होगा. Today we are going to talk about the questions based on key points of this lesson. Question number 1 is, what were some of the famous careers for the young people in the past? Some famous careers for young people in the past were becoming a doctor, a pilot, or an engineer. These few disciplines were considered important in terms of respect and wealth. So these three professions were source of social ranking and earning. Question number 2. Nowadays, non-traditional careers are more appealing to young minds. Why? Today, life has become dynamic and innovative. There is a whole world of non-traditional careers available for the students. It is appealing for them because they can earn money and get mental satisfaction also by choosing their area of interest. तो जैसे कि आपने अभी पढ़ा है, दौरे हाजिर में एक तेजी से बदलती हुई जिंदगी का दौरे हाजिर एक तेजी से बदलती हुई जिंदगी का नाम है. जैसा कि इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने मगरिब के बारे में कहा था कि वहां दिगर गूं है लहजा लहजा. तो एक ग्लोबल इम्पैक्ट की ये एक शक्ल है कि इसके असरात यहां भी आ चुके हैं और नए नए शोबे सामने आ रहे हैं और नौजवान नस्ल उनका इंतखाब कर रही है. Question number 3 is, what is meant by the right profession? A right profession means a profession that guarantees a profitable livelihood, but interest in job and mental satisfaction should also be considered. दुरुस्त शोबा कौन सा है? ये इस लेसन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो दुरुस्त शोबा कौन सा है, इसको फर्द के हवाले से देखा जा सकता है. किसी भी फर्द की जाती दिलचस्पी ही उसके सही इंतखाब की जामिन हो सकती है, अगरचे उसमें मुनाफा बख्श रोजगार को भी जरूरी समझा गया है. क्वेश्चन नंबर 4, why is it important to consider the scope of any field? The scope of any field in terms of market demands should also be considered very seriously. We cannot practically deny the significance of hiring trends. We earn money from our career, so it is important to consider the scope of any field before choosing it. तो हम जब किसी शोबे का इंतखाब करते हैं तो उसके स्कोप को देखना बहुत जरूरी है कि क्या मार्केट में उसकी डिमांड है या नहीं. Question number 5 and 6 are almost similar. First, I read the question 5. Is there any need of proper career counseling department? Why? Career counseling department is very important for choosing the right career because students are not mature enough to make such life-changing decisions and parents are unaware of the market trends. तो स्टूडेंट्स इतने शऊरी तौर पे पुख्ता नहीं होते कि वो अपने जिंदगी के इतने अहम फैसले को ले सकें और वालिदैन मार्केट के जो रुझानात होते हैं उनसे बाखबर नहीं होते, इसलिए करियर काउंसलिंग डिपार्टमेंट बहुत जरूरी हो जाता है. This department can suggest suitable careers for the students
after determining their personality and analyzing their interest and aptitude. तो वो तलबा के, वो स्टूडेंट्स के जो इंटरेस्ट होते हैं, जो दिलचस्पी होती है, जो उनका एप्टीट्यूड होता है, जो उनका रुझान होता है, उसको देखते हुए वो कोई भी शोबे का अ, वो मशवरा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 is almost similar. How can career counselor help the young people? Career counselors are generally well informed about the new trends. उनको नए ट्रेंड्स मार्केट के जो होते हैं उनको उनको इल्म होता है. They can guide the students towards a rewarding profession after observing and analyzing their interest and aptitude of the students. तो ये वही सेम वही बात है. I would like to sum up this discussion with a quotation. Work to become and not to acquire. So think about it. That's all for today. This is your homework, students. Learn and write these textual questions. आपने ये सारे questions अच्छी तरह समझ लें और इनको याद करके लिख लें. शुक्रिया.